Okay, so continuing from the idea that we had yesterday, that ionization energy is the energy required to remove electrons. And there are first, second, third ionization energies, and there are trends in them. There are patterns in them. And scientists have spent a great deal of time, energy, and thought on figuring those out. And they are very closely related to the structure of the periodic table and the way things are shown in the periodic table. The idea of ionization energy has also helped us identify how the electrons are arranged, or how we can arrange the electrons in terms of their energy. कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, किन की एनर्जी इक्वल है. And that has been carefully identified and made into a theory of shells, or the way electrons are arranged. Now here's the thing. We arrange electrons in three main categories, and we say every electron has this idea कि उसका address inside the atom किस तरह से पता चलता है. So there's the shell, there's the subshell, there's the orbital, and there's the spin. Every atom will have these, and these, will every electron in the atom will have these. Now these can change, but two electrons in same atom cannot share all four of. ये impossible है कि कोई एक ही एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स हों और उनका शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, स्पिन चारों एक जैसे हो. नहीं हो सकता. वन ऑफ दीज विल बी डिफरेंट. I'll give you an example. Let's say there's somebody who lives in 192D phase 1 DHA. This is their address in Lahore और इस्लामाबाद, कहीं पे भी हो सकता है. But DHA में phase 1 में D ब्लॉक में 192 हाउस में वो रहते हैं. इनके एड्रेस के चार पार्ट्स हैं, 1 2 3 4. व्हाट कैन वी डू इज कि हम उनको सेम ये चीजें रखें, लेकिन हम डीएचए की बजाय इसको हम लेक सिटी कर दें. दैट्स फाइन. हो सकता है लेक सिटी में कोई घर हो जो फेज 1 में हो, डी ब्लॉक में हो, 192 हो. या हम एक काम करते हैं, हम डीएचए को नहीं छेड़ते, हम 182 को नहीं छेड़ते, हम इसको चेंज कर देते हैं. हम उनको फेज 2 में कर देते हैं. दैट्स फाइन. फेज 5 में कर देते हैं. दैट्स फाइन. फेज 9 में कर देते हैं. दैट्स ऑल्सो फाइन. कोई मसला नहीं. हम इनको भी नहीं छेड़ते, हम इसको रखते हैं, इसको छेड़ देते हैं. या एज यू गेट द आइडिया कि हम इसको चेंज कर देते हैं, इन तीनों को सेम रखते हैं. वी कैन डू दैट. बट इट इज इम्पॉसिबल कि दो घर हों और दोनों का एड्रेस सेम हो. सेम सिटी में तो ऐसा नहीं होने लगा. जस्ट लाइक दैट, सेम एटम में ये चारों चीजें किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स में शेयर नहीं हो सकती. हाँ, उनमें से तीन हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, एक हो सकता है चारों डिफरेंट हो, चारों सेम नहीं हो सकती. दिस प्रिंसिपल कि चारों सेम नहीं हो सकती, दिस इज कॉल्ड पॉलीज exclusion principle. This is one of the things at the heart of atomic structure. The second principle that we will work with is called off-bar principle. Sorry, it should be principle with LE, not AL. Off-bar is simply a German word which means building up. In simple words, electrons choose lowest possible energy for ground state is basically how they will be without any external motivation, any extra energy that they have. That's ground state. ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की. तो अगर एक एटम में फर्स्ट शेल में जगह है तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कभी भी सेकंड पे नहीं जाएगा. अगर एक एटम में फर्स्ट शेल में जगह है और एक ही सब शेल है तो वो उधर ही जाएगा. अगर एक एटम में पहले दो शेल्स कंप्लीट हैं और अगले के सब शेल में जगह है तो वो उसी में जाएगा. वो कभी भी थर्ड को छोड़ के फोर्थ में नहीं जाएगा इन द ग्राउंड स्टेट. हाँ. Sir, Yeah. is this when the electrons are being transferred? No. It is every time electrons exist in an atom without external flow of energy, whether they are transferred, whether they are inside it, whether they have been shared, they will always go for the lowest possible state that is available. But if you give them energy, like मैं उस पर light shine करूँ और उसके electrons को जाके वो photon hit करे और energy transfer कर दे, तो तब वो ground state में नहीं रहेगा, फिर वो excited state में चले जाएगा. And in excited state they can be anywhere. किसी भी शेल में हो सकता है, किसी सब शेल में हो सकता है. But ground state में, when it's naturally there, it's just going to be in the lowest possible energy level.
Okay. Now we have different numbers for shells, but or subshell or orbital. But हम क्या करते हैं? हम एक number use करेंगे. We will call it principal quantum numbers. The idea of quantum number basically means that that number is, by the way, written as n. What I'm saying is that these shells are quantized. That is such a powerful statement that it changed the whole thinking process of scientists when it came out. And that is why many scientists were actually opposed to this idea. These shells are quantized. Quantized का मतलब होता है in fixed packets. Let me give an example. We use quantas all the time in our lives. For example, right now, you might be in grade 12 in your school, or you might be in grade 13 in your school, depending on how many years of school you do. You might be in grade 11 in some schools where they do 2 years of O levels. Now, whether you're in grade 11 or grade 12 or grade 13, one thing is for sure, you were never in grade 11 and half. You will never be in grade 12 and 3/4. You won't be. You will either be in 11 or 12 or 13. You will not jump between them. You will jump from one to another without being in anywhere in the middle. Whenever you are climbing stairs, you're either on the first step or the second step or the third step. You're never on a first and a half step. Only in Harry Potter can you be in platform 9 3/4. There are no 9 3/4 in real life, unless King's Cross मैंने build किया हुआ वैसे तो. The shells are quantized. They exist as fixed numbers. And those numbers are only the places where electrons can be. वो उनके बीच में नहीं हो सकता. किसी एक में होगा या दूसरे में होगा. Now, subshells also have numbers, but just for simplicity, we don't give them numbers. We give them names. So we say S, P, D, F. G, H, I भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई atom इतना बड़ा नहीं मिला जिसमें G हो. But theoretically, it can be there. So electrons can fill these. And the number of electrons that can fill in there depends on how many orbitals these have. The number of orbitals is in odd numbers. So the first odd number is 1. So S has 1 orbital. P has 3 orbitals. D has 5 orbitals. F has 7 orbitals. Okay. And spin is one way of looking at it, is like up and down, or clockwise and anti-clockwise. We show it as up arrow or a down arrow. So electron या up arrow में एक spin रख सकता है या down arrow का spin रख सकता है. That means कि एक orbital में 2 electrons आ सकते हैं. Because एक orbital में या up spin वाला arrow आएगा या down spin वाला आएगा. और इसको box notation से show करते हैं. तो इसका मतलब है box का कि this box is an orbital. And in this box, there are 2 arrows, जिसका मतलब है कि 2 electrons हैं जिनका spin एक दूसरे से opposite. Okay? So I was saying that they can have opposite spins, and those spins are shown by upward arrow or a downward arrow. Okay. So how many electrons can S have? एक orbital में 2 हैं, and you have 1 orbital, so 2 times 1, 2 electrons. And every time S has 2 electrons, we show it as a small 2 at the top like that. The P can have what? 2 times 3. Because में 3 orbitals हैं. 2 times 3, 6 orbitals हो सकते हैं. 6 electrons हो सकते हैं P में. तो अगर उसके पास 6 हैं तो हम उसको 6 लिख देते हैं. और 6 से कम भी हो सकता है. हम P1 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 7 नहीं लिख सकते क्योंकि P में उससे ज्यादा हो नहीं सकते. D में 2 times 5, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. तो वो 10 के बीच में 1 to 10 कोई भी नंबर हो सकता है. अगर 0 होगा तो हम लिखेंगे ही नहीं. एंड सिमिलरली F में 2 times 7, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. Shells have principal quantum numbers, and we write them as 1, 2, 3, 4, and so on. So far, the largest atom that people have found, and people agree that they have found it, is an atom with 7 shells.
which means the largest quantum number that has been observed is 7. There are claims that there are people who say that they have found an atom with 8 in it, but that is disputed at the moment. Maybe in a few years they will agree कि हाँ मिल गया है कोई ऐसा एटम इतना बड़ा एटम, but so far अभी तक नहीं मिला है. Okay. Now these subshells and orbitals होते क्या हैं? Shell is level of energy as we talked about yesterday. In that level of energy there are small fluctuations. मतलब एक लेवल है लेकिन उसके अंदर थोड़ा बहुत फर्क है. I'll give you an example. Let's say hundreds में बात कर रहे हैं हम. Let's say something is in hundreds. Now 100 is a 100, 500 has 500. हैं वो दोनों hundreds, but उनमें थोड़ा सा फर्क है. 900 में और 100 में हैं वो दोनों hundreds में, लेकिन आपस में वैल्यू का बहुत बड़ा फर्क. This is the same thing as shells and subshell. Shell का मतलब है वो 100. Shell is basically a level of energy that they have. But within that level, there are multiple sub levels, multiple differences in there. हैं वो सारे उसी शेल में आते, लेकिन सब शेल्स की वजह से they are smaller variations. And those are subshells. Now, orbitals are not levels of energy. Orbitals are actual spaces. Orbital वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन होता है. So basically, 1 from shell, S from subshell tells me कि इस इलेक्ट्रॉन के पास किस लेवल की एनर्जी है. 1s का मतलब है कि 1 शेल के अंदर S सबशेल वाली. 3p का मतलब है कि थर्ड शेल में लेकिन सेकेंड लेवल पे एनर्जी है उसकी. थर्ड शेल में एक S वाला भी होगा, P वाला भी होगा. अब वो सारी एनर्जी लेके वो इलेक्ट्रॉन है कहां? दैट इज ऑर्बिटल. Orbital is the actual space where the electron lives. And those orbital, just like any room that we have in our houses, उस orbital की भी एक shape है. And people have marked that shape out. S has a shape which is spherical. So this is the shape of S. If they ask you to draw it, you should be able to draw it. S is like this, not like this. It's actually a circle. P, on the other hand, is like a lobe, and P is like this. Although in reality, ये जो point middle में होता है ना, यहाँ पे कभी भी electron नहीं हो सकता. So it's in reality, it's more like butterfly के दो wings जो थोड़ा सा separated होते हैं. But we try to draw it like that, and that's acceptable. D has 2 different shapes. D में एक तो वो ऐसे करके shape होती है उसकी, और D में 4 होते हैं ना orbitals, उनमें से 4 की shape ऐसी होती है. And there is one, the 5th one, जिसकी shape ऐसे होती है. So that is the way D is. So D में ये 2 shapes हैं, P में यही shape है, और S में spherical है. F की काफी different shapes हैं, but we don't need to go into the detail of that. Okay. Now, how does the energy actually distribute inside the atom? So the energy is not distributed linearly. General idea is कि 1 की energy 2 से कम होगी, 2 की उससे ज़्यादा, 3 की उससे ज़्यादा, but that's not always the case. A couple of things that go with it is कि जितना shell number होगा उतने subshells होंगे. So number of shell equals the number of subshells. Yeah, principal quantum number tells me how many subshells you have. So अगर first shell है तो उसमें एक ही subshell होगा. अगर fourth shell है तो उसमें 4 subshells होंगे. So the number of subshells in a shell is equal to the principal quantum number. अब हर subshell में orbitals हमने देख ही लिए 1, 3, 5, 7, और उनमें हर orbitals में 2 spins हो सकते हैं. Now, how are the energies arranged? 1 has S, 2 has S and P, 3 has S, P, D, क्योंकि 3 उसका quantum number है, तो इसका मतलब है उसमें 3 subshell होने चाहिए. 4 has S, P, D, F. 5 has obviously S, P, D, F, G. 6 will have S, P, D, F, G, H.
and so on and so forth. But how are the energies arranged? Energy is not arranged like this. Energy is arranged like this. So here's what we're going to do. We're going to start drawing these diagonal lines, और जैसे जैसे हम एक सबशेल को क्रॉस आउट करते जाएंगे वैसे वैसे हम उसकी एनर्जी लिखते जाएंगे. सो 1s पहला हमने क्रॉस आउट किया. दिस हैज द लोएस्ट एनर्जी क्योंकि सबसे पहले हमने इसे क्रॉस आउट किया. वी आर गोइंग टू ड्रॉ अनदर लाइन 2s. सो दैट्स द नेक्स्ट वन. 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा है. देन द नेक्स्ट वन, एक लाइन इधर आ गई, एक लाइन इधर आ गई. वी आर ड्रॉइंग अ थर्ड वन P, 2p, and then we cut 3s. वही straight line जा रही है. So 2p, 3s. Next one, another straight line. 3p, 4s. So 3p, 4s. Next line, 3d, 4p, 5s. 3d, 4p, 5s. In AS, this is the configuration you need to be familiar with. Iske beyond, the principle will stay the same, obviously, so you can continue to draw them, but you get the idea ki kaise banate hain. The key point to remember here is this one. Beyond 3p, even though 3d is in the same principal quantum number, when empty, d has higher energy and 4s has lower energy. It is a very important thing that कि आपको ये याद हो. And using the off-bar principle, we now know that electrons will first fill 1s, then 2s, then 2p, then 3s, then 3p, and then not 3d. Even though it's in the same principal quantum number, they will first fill 4s, and then 3d, then 4p. और 4p से आगे वो आपके as में नहीं जाएगा. Okay? And the principle is that they fill electrons based on their increasing energy. Okay? So let's try to fill it all up. Let's pick any atom. Let's say I have sulfur. 1632.1 is ka AR hota hai. It has 16 electrons. Now, how is it going to be? The orbitals are going to be 1s, 2s, 2p in this order. So 1s का मतलब है कि first shell, s subshell, उसमें एक ऑर्बिटल होगा और उस ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा. वो ऐसा भी जा सकता है या वो ऐसे भी जा सकता है, डजंट मैटर. अब मैं जरा इन ऑर्बिटल्स को लिख लेता हूं. सो दिस वन इज माय 2s, सॉरी, देन 2p, आई विल ड्रॉ this, then 3s. Why have I drawn 2p and not 2d? Because the principal quantum number is 2, so 2 ही subshells में ही हो सकता है. Then 3p, and then I will not, yeah. Sure, so but like ये तो हम अभी वैसे ही इसना draw करें, but obviously like 2s, 2p ये सारे like different energy levels में होंगे ना. In So the अभी तो मैं sense इनको कि ऐसे draw कर रहा हूँ. But yeah. usually the energy of 1s is less than 2s, and that is less than 2p, and that is less than 3s, then 3p, then 4s, and then 3d. Does that answer your question? Yes, thank you. Yeah. So now the next electron that comes in, so अभी तो इलेक्ट्रॉन इस पूरे में कहीं पे भी आ सकता है. But when you add the first electron, वो कहीं पर नहीं जाएगा. Ground stately, it will go to the lowest possible state, which is this one. और वहां जाकर या वो इस स्पिन के साथ आ सकता है या वो इस स्पिन के साथ आ सकता है. दोनों में से कोई भी स्पिन हो सकता है. इट्स इक्वली लाइकली. बट जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी वी से कि अच्छा जी ऐसे आएगा. उल्टा भी हो सकता है. दैट्स परफेक्टली फाइन. एंड देन द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी लाइक दिस. नाउ इफ वन एटम हैज जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई. ऑब्वियसली वो सल्फर नहीं होगा, वो हीलियम होगा. तो दैट इज हीलियम. डज नॉट मीन कि हीलियम में बाकी शेल्स हैं नहीं, हैं, खाली हैं. अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देंगे, एक्साइटेड करेंगे, तो कहीं पे भी जा सकते हैं. हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन उठ के 4p पे जा सकता है, प्रोवाइडेड इट हैज इनफ एनर्जी टू जंप फ्रॉम वन टू अनदर. और इन सबसे जंप करते करते वो 4p तक चला जाए. अगर उसके पास इतनी एनर्जी है, हम दे सकते हैं एनर्जी, बट ग्राउंड स्टेट में इट विल बी हेयर.
and we will write this configuration as 1s2. An important thing to remember about this configuration is कि इसमें हमारे पास एक ही principal quantum number में electrons हैं और वो भी complete हो गया. This is called noble gas configuration, and we write this as these brackets around the noble gas. तो अगर कोई भी शेल कंप्लीट हो जाता है या कोई भी नोबल गैस की तरह की चीज बन जाती है, दैट इज रिटन एज नोबल गैस सिंबल विद ब्रैकेट्स अराउंड इट. ओके, सो दैट व्हाट इज डन. लेट्स सी किसी में 3 इलेक्ट्रॉन है. द थर्ड इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू कम इन 1s बिकॉज वहां पे जगह कंप्लीट है, सो इट विल गो इनटू 2s. And the next electron will go into 2s but with an opposite spin. और इसको हम लिखेंगे कैसे? 1s2 2s2. This simply tells me कि इसके सेकंड के s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. नोटिस कि ये अगला इलेक्ट्रॉन पहले वाले की तरह का स्पिन नहीं रख सकता. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 या हीलियम विद 2s2, कि पहले जी उसका हीलियम जितना स्ट्रक्चर है वो आप देख लें एंड देन उसका 2s2 है. इंटरेस्टिंगली इफ यू लुक एट दिस, तो पीरियोडिक टेबल का इससे बड़ा क्लोजली रिलेटेड रिश्ता है. पीरियोडिक टेबल में आपके पास ऐसे अरेंजमेंट होती है. यहां पे हीलियम होता है, यहां पे हाइड्रोजन होता है, डिफरेंट रोज होती हैं और इस तरह से वो चलते जाती हैं, और यहां पे वो तीसरा होता है. दिस होल पोर्शन, ये वाला, this is called S block. This whole portion is called P block. This is D block and this is F block. The reason I'm calling it S is कि इसमें periodic table के इस portion में last electron will be in the S subshell. यहाँ पर last electron will be in the P subshell. Here it is in the D subshell, the last electron, and this is in the F subshell. Another important thing to notice over here would be कि अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स वाले किसी को भी देखूं, तो फर्स्ट प्रोटॉन नंबर इसका है, सेकंड इसका है, थर्ड इसका है, 4 इसका है. द ग्रुप नंबर्स आर 1 2. This 2 is actually this 2. And the row number in the periodic table is second. The period number is 2. So that is this 2. And the block is S. So technically, periodic table में किसी भी चीज की पोजीशन हमें लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बताती है. लेट मी पिक समथिंग हियर. फ्लोरीन को पिक करते हैं. फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 9. फ्लोरीन इज इन द सेकेंड पीरियड, तो फ्लोरीन का लास्ट शेल होगा 2. फ्लोरीन इज इन द P ब्लॉक, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन P में होगा. एंड इफ यू नोटिस विद इन P, फ्लोरीन इज इन 1 2 3 4 5 6 5th कॉलम विद इन P. उस ब्लॉक के 5th इलेक्ट्रॉन 5th कॉलम में है वो, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2p5. लेट्स सी अगर ये बात ठीक है. लेट्स सी अगर किसी चीज में 9 इलेक्ट्रॉन्स हो तो ऐसे होता है. सो आई ऑलरेडी हैव 2s, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. लेट मी सी अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा. यहां आएगा. नाउ इंटरेस्टिंगली दीज 3 आर कॉल्ड degenerate orbitals. Degenerate orbitals means they have equal energy. That means नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी आना चाहे तो उसको कोई रोक टोक नहीं है. वो इधर की बजाय इधर आ जाए तो भी ठीक है, इधर आ जाए तो भी ठीक है. इट और ऑब्वियसली वो उल्टा स्पिन के साथ भी आ सकता है, बट यूजुअली वी राइट इट लाइक दिस. नाउ हियर इज अनदर रूल दैट विल किक इन. दिस रूल इज कॉल्ड Hund's rule. Hund's rule basically says that if electrons can have different orbitals, they will not share the orbital. मतलब अगले इलेक्ट्रॉन के पास
एक ऑप्शन है कि वो इसी एनर्जी लेवल जैसा एक और एनर्जी लेवल खाली पड़ा हुआ है उधर आ जाए, ये इस ऑर्बिटल में आ जाए या इस ऑर्बिटल में आ जाए, एनर्जी उसकी उतनी रहेगी, वो 2p की एनर्जी जितना ही होगा, बट बिकॉज दीज थ्री आर डीजेनरेट तो एक जितनी एनर्जी है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम एंड पेयर अप ओवर हियर, इट विल गो इनटू द अदर वन, तो हो सकता है वो इधर आ जाए। यूजुअली वी डोंट राइट दैट, वी जस्ट से कि वो इधर मिडिल वाले में आ गया, बट यू हैव टू रिमेंबर कि उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो इधर तीसरे में भी हो सकता है बिकॉज दे आर ऑल डीजेनरेट। नाउ द नेक्स्ट वन विल कम इन, वो इधर आ जाएगा, बट द नेक्स्ट वन दैट कम्स इन वो 3s में नहीं आ सकता क्योंकि अभी भी यहाँ पे खाली जगह है, इट हैज टू ओबे द ऑफ प्रिंसिपल के एनर्जी सबसे कम में पहले वो जाएगा, so that is why it comes here, then here, and as you can see we have filled 9 electrons. Let's see the configuration. Is it really 1s2 2s2 2p5? It is. So from the periodic table you can easily figure out the configuration. अब ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं रहेगी. So let's try it out. Let me just add one more so that we have this shell completed, and this makes it 2p6, and now I have arranged it just like the atoms of neon. So इस वाले से इस पूरे को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में Ne स्क्वायर ब्रैकेट लिख सकते हैं, तो अब हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है अनलेस एग्जाम में वो हमें कहे कि फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर वो फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहता है तो हमें ये करनी पड़ेगी, बट अगर वो हमसे कहता है शॉर्ट हैंड तो फिर हम सिंपली ये लिख के we'll be done. Now all of that is fine, but the next thing is is there any properties or any other terms that we need to know about this? So configuration तो हम इस तरह से बनाते रहेंगे. Similarly, because आप जैसे जैसे fill करते जाओगे, so यहाँ पर if I fill this next one here, this will be 3s2, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6, and next one will be in 4s, not 3d. 4s complete होगा and then 3d. D में मैंने 1 2 3 4 5 then 6, and then they will fill this up, eventually coming here in this order and in this fashion. They will fill all of it up. But remember that the configuration is simply a game you can easily figure out from the periodic table. What do you need to know? You need to know the blocks and where the things are in the end of the block. ये आपको अगर पता लग रहा है तो that is good to go. Now let me try this out with the periodic table. And sir, Yeah. if we fill 4s before 3d, तो मतलब हम 4s से पहले रिमूव करते हैं कि 3d से पहले रिमूव करते हैं? अच्छा, removal happens in the reverse order of filling. So if you filled this first, then you will remove it later. Okay, thank you. All right, so here's what you have to understand. Do you see the periodic table? Yes, sir. Okay. Now, in this, do you identify the blocks? So this is S block. This whole thing is P block. This 10 columns are D block. Interestingly, S में एक ही ऑर्बिटल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. No wonder we have just 2 columns in S. P में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो हमारे पास 6 कॉलम्स हैं. D में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हमारे पास 10 कॉलम्स हैं. और F में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मतलब सॉरी 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो क्लियरली वी हैव 14 कॉलम्स. It's not a coincidence. Periodic table is one of the smartest things people have invented. Now let's say I pick an element. I want to be able to write the configuration of phosphorus. So here's what I will do. I will first start by looking at Ketcha. It is in the 3rd row. So it's a principal quantum number hoga 3. Then, so it's in the 3 and it's in the P block and it's in the 3rd column in the P block. So इसका last shell होगा 3p3 में.
Now I will go back and I will see कि अच्छा पिछला block अगर मैं यहाँ से वापस अपना रास्ता देखता हूँ, so in the previous block the last one is magnesium. इसी रो में पिछले block में magnesium last था, which was in third row S block second column. ठीक है, now I'll go back. इस block में last कौन सा था? Neon. It was in the second row P block sixth column. उससे पीछे ये था इस block में. It was in the second row S block second column. And then I had helium. Helium is actually in S block. Helium और hydrogen यहाँ होते हैं when it comes to blocks. So it's in the first row, S block, second column. So my configuration of phosphorus would be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. All you have to do is keep finding your way to the previous stop in the block and then figuring out कि इसकी configuration क्या है. और तरीका क्या है? It is the row, block, column. That's how we write it. Now I want you to use this idea. Sir, Yes. for helium we took 1p या फिर 1s, 1s? because helium is in S block. Okay, ठीक है. Okay. Let's try it for something else. Let's say you pick an element. Silver. Silver. Okay, that's a tough one. Because silver is over here. But let me try this out. Now, because silver is in D block, so D block ka number row se ek kam hota hai. So in the D block, remember that the D subshell in 3 is filled before after the P subshell in sorry, kya bol raha hu? D in 3 is filled after the S in 4, right? So D always follows one behind. मतलब अगर ये fifth row में है तो D इसका fourth row का चल रहा है. Similarly, F will always be 2 steps behind. तो अगर एक चीज 7th row में है तो उसका F जो होगा वो 5th row का होगा या 5th quantum number का होगा और उसका D जो है वो 6th quantum number का होगा. So D is always 1 step behind and F is always 2 steps behind. The reason is how the energies are distributed. So for silver, it is in the 1, 2, 3, 4, 5, 5th row, but D block to abhi hoga 4D, and it is in the what column? 9th column in this. So 4D 9 hona chahiye isko. Okay, that's how this should be. And then you have is block ka aakhri wala, which is 5s2. And then पिछले block में you have 4p6. And then पिछले block में you have zinc, which is 3d10. Notice that I said 3d, not 4d, because ये एक step पीछे होगा. फिर उससे पिछले block में you have calcium, which is 4s2. Then you have argon, which is 3p6. क्यों? Third row, P block, 6th column. Then this is 3s2. This is 2p6, 2s2, 1s2, and I figured this out. Now, here's another important idea to remember. Sometimes when one subshell can be filled to the fullest by compromising on another subshell, that is what the atoms try to do. So आप देख सकते हो कि 4D would be completely filled if it had 10 electrons. But silver doesn't have 4D 10. Why? Because right now 5s was filled before 4D. So अब यहाँ पर 1 electron from 5s can be brought into 4D. And that is what silver does. So 5s 1 हो जाएगा and 4D 10 हो जाएगा. उससे D will have a special case of completion. And not just D. पूरा 4th subshell काफी हद तक complete हो गया है. Obviously F यहाँ पे खाली है. So 4 में S भी full है, P भी full है, D भी full है. So D subshell complete होने की वजह से this configuration changes a little bit and you get 5s1, 4D10.
And this is not limited to silver only. Copper does it, chromium does it, and these are three cases in your syllabus that you should know about, because the when you remove electrons are removed from the highest energy level first. So 5s, after it's filled up, will have higher energy than 4d. So इस वजह से जब सिल्वर में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वो सबसे पहले, sorry, what was this? Yeah. When silver will remove electron, it will remove it from the highest energy first. So इस वजह से 5s वाला इलेक्ट्रॉन सबसे पहले remove होगा, which is why we usually find silver in +1 situation. Similarly, copper के केस में भी अगर हम देखें, so copper is technically 4s2 3d9, and you can figure this out. But because D can have 10 and that way it will be completely filled up, one electron is given there and becomes 4s1 3d10. So when copper loses electron, it loses this first, so becomes copper +1, and then it loses the one that it gave to 3d, so that makes it copper +2. Of course, there are reasons कि वो इसके beyond क्यों नहीं जाता, and we will study those reasons. So that is how these electrons are arranged inside the atom. Okay, and that's configuration. I would like you to review the electronic configuration, and I want you to be able to write the configuration of first 36 atoms. But if that is a little tough, तो आप एक काम करें कि अभी के लिए आप first 20 को तो at least देखें. But try to fill this up. I will still suggest कि first 36 की आप try कीजिए. And if there is any question, feel free to let me know.